Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So hey guys, I'm going to meet Geekyranjit and Amit from Phone Radar, and I'm going to be starting my journey. And I'm be catching a metro over here, so I'm going to Aerocity metro station and from there to Azad Delhi venue, and let's see how the meetup is going. So you're watching Technical Chaharji right now. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel right now. So hi guys, I just get down from the Aerocity metro station and now proceeding to the venue. Let's see how much time it will take more for me to reach the venue and meet the big YouTubers, the Ranjit and Amit, and let's see how the things are proceeding this evening. It's going to be special. How big we are, how we can take it to be filled. And guys, you proved it. Yes, we are fine. आपका फोन आया था, हम बहुत सही है सर, मतलब कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक सवाल, आप अपने हिंदी वाला चैनल क्यों नहीं चला? अरे यार स्लो डाल, मैं हिंदी जो है ना मेरी एकदम शुद्ध नहीं है, तो लोग ना थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर हो जाते हैं कमेंट में ऑफेंड। सर आपको क्या लगता है स्मार्टफोन में नेक्स्ट नया इनोवेशन क्या रहेगा? डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चल रहा है, नेक्स्ट फिंगरप्रिंट देखो भाई, अभी तो डिस्प्ले पे भी आ चुका है ऑन डिस्प्ले, सो दैट आई फील विल बी द न्यू ट्रेंड. Some companies have already started doing that, so I see that. Anything else? I am personally looking for the foldable display जहाँ पर मैं फोन को स्लाइड करूँ. Showing you the product as well. So Zenfone 5D, front and back, as you can see, is 2.5D glass that looks really cool and beautiful. It's got a 90% screen to body ratio. It's just 7.7 mm film with an aluminum body on the side, which is therefore sandblast fit, and gives a super premium feel to the product. It will come in two fantastic colors, meteor silver and midnight blue. What we've got in this phone is the world's fastest, smartest flagship processor, which is the Snapdragon 845. And what we've done is we've actually made full use of the AI engine capability. AI मतलब artificial intelligence. So artificial intelligence capability के साथ Snapdragon 845 को use किया गया है Zenfone 5D में. PUBG plays brilliantly on Zenfone 5D, friends. PUBG plays brilliantly on Zenfone 5D. Later on in the demo zone, you can actually play PUBG on Zenfone 5D and experience PUBG on Zenfone 5D. So what we've done is, you've got a brilliant display, you've got a very powerful processor, you've got LPDDR4X RAM, UFS 2.1 memory, Snapdragon 845 processor, plus an amazing audio experience. बहुत ही अच्छा audio experience है Zenfone 5D पे. तो जब आप इससे PUBG खेलेंगे, आपको जो experience मिलेगा वो किसी और स्मार्टफोन पे आपको नहीं मिलेगा. अच्छा हार्डवेयर नहीं है कैमरा में, बस इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट है, जिसमें स्क्रीन डिटेक्शन होता है. तो
तो आप कोई भी सीन को जब शूट करना चाहेंगे तो आपका जो फोन का मोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा शूट के लिए। पहले मोड आते थे लेकिन आप फोटोग्राफ फोटो पे ही लेते थे, अब इसके अंदर जो मोड है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको ऑप्शन बढ़िया तरीके से हमें मिलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सीन है इसमें। कभी कश्मीर जाएंगे तो बर्फ में भी आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से फोटो लेगा आपको। और अगर एयर गैलरी की बात करें तो ये फोन आपसे बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ इंटेलिजेंटली और इंट्यूटिवली करने लगता है। तो एयर गैलरी की अगर बात करें तो इसके अंदर है, अगर आप फोटो लेते हैं तो सारे फोटो में से सब लोगों के फेसेस ये आइडेंटिफाई करके लिस्ट करेगा। इसमें से आप चूज करेंगे कि मेरे फैमिली में ये लोग हैं तो इनके फोटो सिलेक्ट करके मैं फैमिली ऑल्बम बना लूँगा। बाद में अगर अपनी फैमिली के साथ फोटो देंगे ऑटोमेटिकली उन लोगों की पिक्चर जो आपके साथ है वो फैमिली फोटो फोल्डर में चले जाएंगे। सिर्फ वही नहीं, जब जैसे अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे आपको फोटो भेजे तो वो फोटो भी जाके फैमिली फोल्डर में जमा हो जाएंगे। तो आपको एक ही जगह पे अपने फैमिली की सारी पिक्चर मिलेगी। एयर चार्जिंग आपसे सीखता है कि आप कब फोन को चार्जिंग पर डाल दो जब आप यूज नहीं कर रहे हो, और उस पीरियड में जब आप अपने फोन को चार्जिंग पर डालते हो जब आप यूज नहीं करते हो तब वो फोन की बैटरी को 80% तक चार्ज करता है और उसके बाद 80% तक ही रखता है, और 2 घंटे पहले आपके यूज करने के फोन को 80% से 100% तक ले जाता है। और इससे आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो 2 गुना हो जाती है, 2 गुना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम से कम ब्लोटवेयर अपने फोन में डालें, या ब्लोटवेयर जो ब्लोटवेयर आप कहते हैं वो प्री इंस्टॉल ऐप्स उसे हम कहते हैं। तो इसमें सिर्फ 4 ऐप्स अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल ऐप्स सिर्फ 4 ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड है, और उसमें से आप एक ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। और वो जो 3 ऐप्स इसमें आती है प्री इंस्टॉल जो थर्ड पार्टी है वो है फेसबुक जो आप डेफिनेटली यूज करते हो मेरे ख्याल से, मैसेंजर जो आप डेफिनेटली यूज करते हो, और इंस्टाग्राम जो आप डेफिनेटली यूज करते हो। जो आप डिलीट कर सकते हो और ये चीज़ अनइंस्टॉल कर देना। All of you, thank you. Guys, this is the ending video, and luckily in the end I got a click with the technical Guruji, with Ranjit and with Amit, and it's the highlight of the day for me. So right now I'm going to show you the pic, and till then please subscribe to my channel, and this is the end of the video. I hope you like this
little bit of fan meetup which we have done, and the ASUS 5 launch 5 headset. So other videos of the launch 5 that which I've collected and with my hands-on experience I'm going to share. Till then, please subscribe to my channel and stay tuned for more.